Hello everyone. Let's continue with the discussion of class 10 mathematics sample paper section B, question number 21. Find the ratio in which point minus 3 comma k divide the line segment joining the points minus 5 comma minus 4 and minus 2 comma 3. Also find the value of k. Here I have considered that this p point has divided AB line in n ratio 1. In book, although we consider k ratio 1, but in the question we have to find the value of k. So to avoid any confusion, what I have done, in place of k I have written here n. Now we all know that section formula is x is equal to n x2 plus 1 into x1 divided by n plus 1. Same is written for the y coordinate also. Here the coordinates of a will be equal to the values of x1 and y1. Coordinates of P is equal to x comma y. Coordinates of B is equal to x2 and y2. Let's put this value to get our answer. Value of x is minus 3. N is unknown. Value of x2 is minus 2. Value of x1 is minus 5 divided by n plus 1. Cross multiplied minus 3n minus 3 is equal to minus 2n and minus 5. Let's shift the similar terms together. Minus 3n plus 2n is equal to minus 5 plus 3. Minus 3n plus 2n is equal to minus n. Minus 5 plus 3 is equal to minus 2. So the value of n is equal to 2. Ratio I have considered as n ratio 1. So my final answer will be 2 ratio 1. Okay, so AB line is divided as 2 ratio 1. Now let's put value in y coordinates to find the value of k. Y is given to me as k. Value of n is 2 now. Value of y2 is plus 3 and the value of y1 is minus 4 divided by 2 plus 1. 2 3s are 6. 6 minus 4 is equal to 2. So the value of k is what? 2 upon 3. With this question also ends here. Let's move towards next question. From an external point P, tangents PA and PB are drawn to a circle with center O. If angle PAB is equal to 50 degree, then find angle AOB. Let's solve our question. We all know that PA is perpendicular to OA. This simply means that this whole angle is of 90 degree. Now, if this whole angle is of 90 degree, this part is 50 degree. So the remaining part will be 90 minus 50, that is 40 degree. Also, if you look at this part, OA and OB are the radius of the same circle. Now, if I consider triangle AOB, what I get here, that OA is equal to OB, so that means this triangle is isosceles triangle. Now, by isosceles triangle theorem, if the sides are equal, then their opposite angle will also be equal to one another. So means if OAB is 40, so the other angle OBA will also be equal to 40 degree. In question we have to find the value of angle AOB. So how we can find this value? By using angle sum property. Means we will subtract these two angles from 180 degree to get our answer, which is 100 degree. Next question, we have to explain that why these two given numbers are composite number. Composite number means more than one factor. So from the first number, take 11 common, 7 into 13 plus 1. You can clearly see that this one has more than one factor. First factor is 11 and the second one will be this one. Same way you can write down about the same thing about the second number also. For the second number, take 3 as common, and again you can clearly see that both of the number have more than one factor. So that means given numbers are composite numbers. Let's move towards the next question, where we have to find the rational number between root 2 and root 3.
Decimal expansion for root 3 is approximately 1.414, while for root 3 it is approximately 1.732. Now write down any decimal number. Suppose I have written 1.6, which will come in between these two numbers. Next, just write down its expanded form to get your answer. So with this question also ends here. Next question, find seventh term from end. इन्होंने स्टार्टिंग से नहीं बोला है, एंड से बोला है, इसको ध्यान रखना है. ए हो गया 184, डी हो गया -3 एंड ए एन इज इक्वल टू 7. So firstly, what I am going to do, I will find out the total number of terms. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए ए एन का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, विच इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट किया, ए एन का वैल्यू 7 है, ए का वैल्यू 184 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू -3 है. कैलकुलेशन की और n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 59 प्लस 1 इज 60. सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ चुकी है मेरे पास, 60. सेवंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट कैलकुलेट करनी है. बेसिकली क्या कीजिए, 60 में से 7 माइनस कर दिए, देन ऐड 1 कर लीजिए, और रिवर्स में काउंटिंग कर सकते हैं, टोटली योर चॉइस. अब हम कैलकुलेट करेंगे सेवंथ टर्म. सेवंथ टर्म दैट मीन्स A7 को मैं यहाँ से क्या करूंगी, सॉरी नॉट A7, सेवंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 54. तो मैं कैलकुलेट करूंगी यहाँ पर A54 की वैल्यू. A54 मीन्स A प्लस 53D. A की वैल्यू 184, 53, D की वैल्यू -3. सॉल्व करेंगे टू गेट आवर आंसर. सो विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो एंड्स हियर. इसी क्वेश्चन में एक और इंटरनल चॉइस भी है. द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 11 मीन्स a प्लस 3d इज इक्वल टू 11 आपके पास गिवन है. इसके अलावा सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म इज 34. फिफ्थ टर्म मीन्स A5 को आप लिख सकते हैं a प्लस 4d. सेवंथ टर्म मतलब a प्लस 6d. ठीक है, इन दो इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा. a प्लस 3d इज इक्वल टू 11 और a प्लस 5d को अगर आप सॉल्व करते हैं, सपोज आपने इनको माइनस किया, माइनस का 2d इज इक्वल टू -6. d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई यहाँ से. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है जो 3 से डिविजिबल है, वो है 12 और लार्जेस्ट है 99. तो इस बेसिस पर हमने अपनी AP सीरीज प्रिपेयर कर ली. यहाँ पर a की वैल्यू है 12, d 3 है, an 99 है. सो an की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को पुट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है. ठीक है, सो विद दिस सेक्शन B ends here. Thank you very much for watching this video.